presentation doesn't mean handwriting. Okay, so no extra marks for good handwriting. Extra marks we are getting for the good presentation. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to talk about how I scored exemption in CA Interlaw. What did I do extra? What was my strategy? What was my plans? What were that things that I kept in my mind while preparing for law exam? Okay, now the first thing that I did was I didn't study law as a theory subject. Instead, I studied it as a practical subject. Okay, now what does it mean not studying as a theory, studying it as a practical subject? It clearly means that how I studied advanced accounting. Similarly, I studied for law. The another thing that I did was starting from the beginning. Don't delay till the end, doing it later or studying it later. No. Okay, understand this is a law subject. It is a vast subject also because many provisions are there. You have to memorize all the provisions to get exemption to clear the law exam now. So better to start from the beginning. It's okay if you are starting in small chunks, but start from the beginning and complete it before. The other thing that I would recommend is practice. Okay, what do you mean by practice? Writing practice. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो क्योंकि जितना तुम लिखोगे ना उतना दिमाग में रिटेन होगा, उतना ही ज़्यादा तुम रिटेन कर पाओगे. विदाउट राइटिंग यू कांट रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, मेरे लिए तो यही था कि मैं जितना ज़्यादा लिखती थी उतना ज़्यादा दिमाग में रिटेन होता था. तो जितना लिखोगे उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में रिटेन भी होगी चीज़ें और स्पीड भी इंक्रीज होगी. तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर इन अ वेरी गुड पेस. राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी तुम्हारे टीचर्स ने दे रखे हैं वो वाले क्वेश्चंस, तुम्हारे लेक्चर्स ने लाइक प्रोफेसर्स ने दे रखे हैं वो वाले क्वेश्चंस. सो डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन राइटिंग फॉर्मेट. सिर्फ है ना, क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ के यू कैन से कि हाँ ये मेरे को आता है. ओके, नेक्स्ट व्हाट आई विल सजेस्ट राइटिंग अ मॉक्स. Okay, writing a mock test is really very important. If you start from 1 month before exam, 15 days before exam, 10 days before exam, doesn't matter. बट एटलीस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर तुम लिख के जाओ. तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में जब पेपर तुम्हारे हाथ में आता है, whether you are able to apply your brain or not, whether you are able to write down the answers in a piece of paper or not. ठीक है, तो मॉक टेस्ट लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करो. एटलीस्ट 1 या 2 तो मॉक टेस्ट लिख के ही जाओ. नाउ लेट्स कम टू प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट. ओके, प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंस रखती है. ठीक है, ऐसा नहीं है. व्हेन आई से प्रेजेंटेशन डजंट मीन हैंडराइटिंग. Okay, so no extra marks for good handwriting. Extra marks we are getting for the good presentation. ठीक है, so now good presentation is really important. कैसे? अभी now you all know कि the answer will be divided into 3 parts. पहले लिखोगे तुम provision, फिर लिखोगे तुम analysis, फिर लिखोगे तुम conclusion. Right? So in the provision part of it, you have to start your that part. You have to start with stating a section. So your marks are not going to deduct for not quoting the section. ठीक है, section quote नहीं किया तो marks cut नहीं हो जाएंगे. After writing your answer, like after presenting your answer in provision, analysis and conclusion, make sure after completing your answer, make sure you underline the keywords. ठीक है, मैंने क्या किया था in conclusion, what was my final answer. ठीक है, जो भी मेरा फाइनल आंसर होता था उसको मैं डबल अंडरलाइन कर देती थी, सेइंग दैट दिस इज माय फाइनल आंसर. एंड वन मोर थिंग, that you have to underline it with pencil, no pens. Okay, no color pens, nothing like that. Okay, only pencil you have to underline. So you can also do that. Make sure that you know the keywords, you know how to underline and divide your answer into 3 parts. It's okay if you don't quote the section and if you are not sure about, so that's completely fine. Your marks won't get deducted. Furthermore, I will also say that stick to the ICI module. ठीक है, ICI मॉड्यूल पे स्टिक रहो. ठीक है, जो भी ICI मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हैं सब अच्छे से पढ़ के जाओ. ठीक है, सारे के सारे मैटर, सारे के सारी थियोरी ICI मॉड्यूल से पढ़ के जाना है बहुत ही ज़्यादा. You know, there is one saying that I am not afraid from the person who has studied 10 books at a time. I am afraid of a person who has studied same book 10 times. I hope you got it. See you in the next one.